Good evening, sir. गुड मॉर्निंग महक। Good morning, sir. Sorry. सो हम लोग डाउट डिफिकल्टी सेक्शन स्टार्ट करें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का। Yes, sir. So, हाँ बेटा, question number 23. एक सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ एक सेकंड। So, in question number 23, I just wanted to check just reconfirm the answers. वेट फॉर 1 मिनट, मैं करता हूँ। Yes. हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आपको चेक करवाना है बोलो। So, 23. 23 या टेल मी बेटा, Yes, sir. I just wanted to reconfirm the answers. या टेल मी द आंसर्स Break-even point in value, I got it as 33 lakhs 33,333. करेक्ट है। And in units will be 33,333. या फाइन। And sales यूनिट revenue 46 lakhs 66,667. करेक्ट है। So then 24, I didn't understand what is cost break-even point. Like there's no contribution given, so I didn't know. Variable cost is given na per unit, so Yes. you can go from that also. So I can do fixed cost divided by variable cost. Yes, difference in fixed cost divided by difference in variable. Yes. They I ask understand. various pair of plant. Yes. So first you have to prepare the A and B. Then second one, A compare with C. Okay. Yes. And then third compare is B compare with C. Yes, I'll do it. Okay, you will do at homework, right? Yes. So question number 25. Question number 25. Yes. Yeah, tell me. So I just wanted to confirm the third point. That is, he would incur 25,000 expenses per year. That is fixed cost for the only the third point, right? Yes, this is And the, yes, if Mr. X estimate that even if he close the door of business, he would incur 25,000 expense as a year. So this is your unavoidable fixed cost, 25,000. okay. Yes. Total fixed cost normally it is a 80,000. Yes. Unavoidable is 20,000, 25,000. So avoidable fixed cost is 55,000. Okay. Yes. For shutdown point, हम लोग क्या करते हैं बेटा? Avoidable fixed cost upon very contribution per unit या तो PV ratio, तो PV ratio यहाँ पे Yes. So on 26, I didn't understand the whole question. 26. ओके, आपने एक डिफरेंशियल कॉस्ट का हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था महक, इफ यू रिमेम्बर, और जिसमें हमने Yes. प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट किया था. सो नाउ विल गो फॉर दिस क्वेश्चन 26.
Just 1 minute. Huh? Yes. Hmm. Huh. 26. A small manufacturer produce an article, the operated capacity is 10,000 units, while the normal capacity of his plant is 14,000. तो 4,000 की हमारी स्पेयर कैपेसिटी है अभी, वर्किंग एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स रियलाइजेशन. He has formulated his budget at under 10,000 units, 14,000 units. Sales realization, variable overheads, semi-variable overheads, fixed overhead. He gets an order for quantity equivalent to 20% at operated capacity. So 10,000 का 20% बेटा. Yes. 2,000. 2,000. Yes. And even on this additional production, profit margin is desired at the same percentage on sales realization as for production to the operated capacity. मतलब present जो हमारा margin है, that assuming prime cost is 20. constant per unit of the production, what should be the minimum price to realize this objective, right? So So this first we is will, not 12,000. It is 2,000 only. yeah, assuming that the constant per unit of production prime cost, what should be the minimum price to realize that this objective? So we have to find out for 2000 units. Yes. I did a mistake by taking it as 12,000. Okay, so should we solve this question or you No, will no, solve it? solid. Sorry. मैं अब भी सॉल्व करूं मैं कि आप बाद में करके मुझे वापस पूछोगे? No, so I'll do it at home. Okay, fine, I'll do it at home. absolutely. Next. And next was, so question number 30. Okay. Determine the selling price per unit, earn 12% net of capital employed, net of taxes 40%. The cost of producing production and sales 80,000 units. Material 4 lakhs 80,000, labor 1 lakh 60, variable 3 lakh 20, fixed overhead 5 lakhs. The fixed portion of capital employed is 12 lakhs and variable portion is 50% of sales or a turnover. तो इसके अंदर बेटा है ना, हम लोग को एक क्वेश्चन मैंने कराया था वैसा ही है, जस्ट थोड़ा सा आपको याद ये रखना है. Calculations of return on investment or either return on capital employed percentage बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना है. अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से एग्जांपल मेरा 100% है, टैक्स रेट इज 40%, तो पैट कितना हो गया? 60%, राइट? अब ये 60. 60% मुझे 12% चाहिए, तो बिफोर टैक्स मुझे कितना परसेंटेज अर्न करना चाहिए? Yes. और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज नेट ऑफ टैक्स 1 minus t. देन हमने किया था वैसा सेम टू सेम. Yes. फर्स्ट यू हैव टू determine the capital employed, then profit, then फिर total cost plus profit sales divided by
सेल्स क्वांटिटी। इतना पार्ट लिखना है तो लिख लो बेटा। Yes. Yes. Yes, sir, done. डन। Yes. नाउ टेल मी नेक्स्ट पार्ट। So, question number 34. 32। 4. Last question. So, या 4. टेल मी। 34. So, there they said that they have to keep the sales mix ratio the same thing. So, that should be like it should be 25 to 40 to 60 only, the ratio. हम्म, यही रेशियो सेल्स मिक्स करेक्ट है। So, I did the statements showing profit or loss. हाँ, सो Then लॉस शुड बी finding. हाउ मच रुपीज? 37,200, Yes, sir. right? Now Yes. they ask the Yes. two different way. The management is worried about the result. You are required to prepare statements in the amount of loss. तो आपने find out कर लिया 37,200, right? Yes. Your loss is 37,200. Showing them, if any, being incurred at present, recommend change in sales value of each product. So first you have to find out for each product statement showing changes in sales of each product. That means first if you will say X, the loss amount divided by PV ratio. PV ratio is 50%. तो कितना आ जाएगा देखो 37,200 divided by 50%. 74,400. 74,400. 400 ना? और या तो X का इंक्रीज करो, अदरवाइज यू कैन इंक्रीज फॉर Y 37,200 divided by 40%. Tell me the amount. 93,000. 93,000. Or either you can increase the sales for Z. One lakh 24,000. 1,24,000, right? Yes. इतना लिख लो पहले कि लिख लिया आपने। लिख के हो जाए Yes. मुझे बता। डन। Yes, sir. Done. Second part, as well as in total sales value maintaining the same sales mix which will eliminated the said loss. So यहाँ पे
So loss amount is 37,200 should be divided by combined PV ratio, overall PV ratio, right? Or either we can say it's a company PV ratio. So tell me the amount of contribution, total contribution XYZ जो आपने loss find out किया तब किया होगा आपने. Yes. बोलो कितना है PV ये contribution? For total 1,25,000 plus 1,25,000 contribution. 4,65,000, like total 4,65,000. हाँ 4,65,000 correct. So my PV ratio should be I think 37.20%. जरा check करो. Yes. Done. Yes, sir. So 37.2%. So it should be a 1 lakh. That 1 lakh should be distributed in the ratio of 25, 40 and 60 between X, Y, Z. Tell me the figure. So 25,000. How much? No, 1 second. 20,000. Yes, 32,000 and Hmm. 48,000. Complete this. Yes. Yes, sir. Next, beta. So done. Done, na? Yes. So अभी आप बेटा मेरे से क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करोगे कि आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो? I WhatsApp you. ओके फाइन. तो ये 22, 20 सब क्वेश्चन जो भी आपने कंप्लीट कर लेंगे वो Yes. मुझे कर दीजिए. Yes. Now we will continue with the Overheads. your present topic overhead na I think. Yes, sir. Just wait 1 minute. एक मिनट मैं Yes. पीडीएफ फाइल.
आई थिंक मैं हम लोगों ने 1, 2 and 3 तीन क्वेश्चंस कर लिए थे. Yes. आपने रिवाइज किया ये? Yes, sir. So I guess the fourth author is done. For this also done, no? Yes, sir. Now, number 5. Please read question number 5. What is the requirement part? The machine rate. So therefore, we have to find out budgeted overhead of that particular machine. That means overhead related to that particular machine divided by estimated working hours. Yes, sir. तो मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. Yes. So tell me the depreciation amount. So installation charges should be added to the cost of machine. Yes, for depreciation you have to add it. 7,000 per year. Sorry? 7,000 per year. 7,000, yes, correct. So write down statement showing machine hours rate. So now, first of all, we will write fixed cost. Fixed cost, first we have to find out the depreciation. So machine purchase cost 1 lakh plus installation charges 10,000 minus 5,000. 5,000 is a scrap value divided by 15 years. Yes. Then tell me the next expense. So general lighting. General lighting, just tell me how much rupees. 300. Okay, next. Insurance premium. 960. 960. Next, Peter. I want only fix first. And repairs and maintenance expenses 1,000. Repair and maintenance 1,000. Then next, see cost of machine is done. Then installation charges done. Yes. This then rent.
How much rupees should we write rent? Yes, rent will be 600. Sorry? Hmm? I took it as I took it as 200 is rate rent and rates for the shop per month is 200. So 200 into 12, and the Hmm. machine occupies 25% of the total shop area. So into 25%, 600 I got. Yes, correct. Any other fixed cost? And supervision Rent हो गया, depreciation, general lighting, repair maintenance, then supervision repair cost maintenance. 11440. Supervisor charges now. Yes, sir. 1,440. Okay. कैसे कैलकुलेट किया? So 600 into 12 into Hmm. 20%. Correct. And power consumption by any chance? That is variable. Variable. Yes. Yes, this depends upon the utilization. So it is Yes. based on utilization, Variable. therefore it's a variable. Yes. Tell me, total Yes, sir. 4,300. 11,300, right? Yes, sir. I Divided guess so. by I'm not written the whole thing. estimated So hours. 5.65. So this is fixed overhead rate per hours 5.65 plus variable overhead rate per hours. Yes. Under the variable there are only one expense is there, power. Tell me कैसे calculate करेंगे power? Wow. So 2,000 into 10 times. That I is the want total per hours. power consumed. Hmm. So they specified what? 10 units per hour rate of power 100 units 20 rupees. So if I want to produce 100, I have to pay 20 rupees. But 1 hour में मैं कितना produce कर रहा हूँ? How much quantity? 10? Yes. So you can go directly also like this way. Otherwise भी आप कर सकते हो, पहले 2000 hours के हिसाब से देखो, फिर divided by 2000 hours करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा. Yes. कंप्लीट कर लो. Yes.
Done, Mahek? Yes, sir. Done. Can we start next question? Yes. Hello. Yes, sir. Huh, I'm here. so next question. Huh? Yes, sir. Norma Limited is a retailer organization which operates three sales department and administration department in large supermarket complex. Each sales department has a manager and its own prescribed gross margin related to selling price. Exceptional, the general manager permit the departmental manager to reduce the selling price of a product by giving quantity discount, a special price for a large order for an item of outdated stock. Yes, Audio video equipment, electrical applications, and furniture. Stock on 1st November. Cost at full sales value. So this will be little bit important for us. स्टॉक जनरली हमको ऑलवेज कॉस्ट पे देते हैं. आज तो कॉस्ट भी दिया है एंड सेल वैल्यू भी दिया है कि अगर यही स्टॉक हम सेल करेंगे तो कितना मिलेगा. ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द नवंबर. Purchase 1,50,000, net sales 2,50,000 and price reduction approved 5,000. That means अगर मैं gross sales की बात करूँ तो 2,20,000 होगा, 66,000 होगा and 2,31,000. Correct? yes, Now rent. They specified amount also and they specified basis also. Light and heat. Advertising 35 to 50 sales value for the month before any reduction. मतलब इनका total 2,20,000, 66,000 and I think 2,31,000 होता है ना. yes, Based on that ratio. Then transport same ways, insurance be same, miscellaneous be same, canteen number of employees, salary wages, see details information given below, depreciation see details information given below, administrative direct. Salary and wages. So audio and video equipment 11,900 they specified. Furniture applications for sorry electronic applications, then furniture, then administrative, and total 24 910. Depreciation is already bifurcated. Number of employees is given and area occupied is given. Each month the total cost of administration department are apportioned to the three sales department on the basis of sales value for the month before any reduction. So ये reapportion का दिया है secondary distribution, right बेटा? yes, Using the data given, prepare tabulate profit and loss statement for each sales department for November. आप एक बार go through कर लो question, फिर हम लोग discuss करते हैं इसके yes. बारे में.
डन। Yes. देखो बेटा, अपने को रिक्वायरमेंट पार्ट क्या पूछा गया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो ओवरहेड है वो तो हमारा एक्सपेंस है। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो हम ओवरहेड लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आई नीड अ फिगर ऑफ स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। दैट मीन्स इफ वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, then closing stock should be the balancing figure. Is that clear? So first we have to struggle for GP ratio. Yes. तो जस्ट ट्राई करो बेटा, जीपी रेशियो कैसे मिलेगा। आप थोड़ा सा ट्राई करो, हाईलाइट किया है मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें, मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे ब्लू मार्क से। कैन यू फाइंड आउट द जीपी रेशियो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? Actually, I had आवाज क्रिक हो रहा है मैं। so actually my internet connection was unstable. Now it's clear. Hello. हाँ बेटा। Sorry, the internet connection was unstable. Uh, Now it is clear. या नाउ क्लियर। हाउ टू फाइंड आउट जीपी रेशियो? So price reductions approved was it was with the net sales. हम्म What does that mean? Price reductions. Okay. डिस्काउंट। Yes. डिस्काउंट बेटा, price reduction is nothing but it is represent discount. You have to add it like for Sorry? you have to add it for the total sales. Yes, Like, this is total sales. That part we will go later on. For GP ratio, you just use that information. Can you find out GP ratio? yes. One second. So 30.23 for first audio and video. कैसे कैलकुलेट किया? Uh, two lakh 15,000 minus 1,50,000 divided by 2 lakh. नो 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 नो, बिकॉज आपके पास बेटा सीओजीएस ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक Oh, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस। right. Yes. वो इंफॉर्मेशन, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो अभी यूज ही नहीं करनी है आपको, यूज करनी है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, देन यू विल गेट द जीपी रेशियो। Yes. देख बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट इज 1,20,000, और इसको ही अगर मैं सेल करने जाता हूं देन आई विल गेट 2 लाख रुपीज। दैट मीन्स 80,000 80,000 इज माई GP. जीपी। नाउ टेल मी द जीपी रेशियो। हाउ मच परसेंटेज? 40%.
40%. Similar way, application, electronical application, Yes. 1,10,000 minus 80,000. So I think 30,000. 20. Yes, sir. So if percentage is not full frictions, then we'll write 3 upon 11, right? Yes, sir. 30,000 divided by 1,10,000. So 3 So we upon cannot 11. write it in percentage fixed. Yeah, we can. That's not an issue. 27.27 आया ना, just check. Yes, sir. 2,80,000 minus 2 lakhs. So 8 upon 28, or we can say 28.57. 28.57%. 57. Complete this. Yes, sir. So I just wanted to ask, this transaction during November, why didn't we take? Sorry? So the below one transaction, the first one is stock at 1st November, and the Hmm. sales also is on 1st November. Beta, it is not a sales. It is Sales not a value. sales. सेल्स वैल्यू इन अ सेम डे, दैट मीन्स मेरे पास जो स्टॉक है 1 नवंबर को ओपनिंग स्टॉक, उसकी कॉस्ट 1,20,000 है. अगर ये 1,20,000 को ही अगर मैं बेचना चाहता हूँ, अगर ये 1,20,000 का जो मेरे पास स्टॉक है कॉस्ट में, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो मार्केट का वैल्यू है 2 लाख रुपीस. इसका Yes, मतलब क्या हुआ? इफ आई वांट टू सेल, आई कैन सेल एट 2 lakhs, बट सेल्स 2 lakhs नहीं है बेटा. yes, मैं फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर सेल कर रहे हो, आप मोबाइल परचेस कर रहे हो, मोबाइल सेल कर रहे हो. अब जो मोबाइल आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में है, yes, उसकी वैल्यू आप कैसे करोगे बेटा? कॉस्ट पे, oh, yes, of course. राइट? दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द this period will be the opening stock of the next period. Yes, सपोज आप जो मोबाइल परचेस कर रहे हो, उस मोबाइल की कॉस्ट है 10,000 रुपीज. Say example, that is the cost is 10,000 rupees. Purchase cost is 10,000. तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 2 क्वांटिटी था, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया. अब मैंने बताया कि अगर आप ये मोबाइल बेचते हो, अगर आप ये मोबाइल बेचते हो, तो आप 15,000 में बेच पाओगे. कितनी क्वांटिटी आपके पास? 2 क्वांटिटी. तो 30,000 yes, रुपीज आपको मिल सकता है. दैट मीन्स यू yes, कैन अर्न द प्रॉफिट ग्रॉस इज 10,000. बाकी कोई एक्सपेंस आपने डेबिट नहीं किया, तो ये जो 10,000 आया वो आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. yes, एंड 1/3, 10,000 अपॉन 30 इज अ 1/3, और 33%, 33 इज योर प्रॉफिट रेशियो. मतलब आप जो बिजनेस में काम कर रहे हो, उस बिजनेस का ये जीपी रेशियो है. तो आपको सेल्स कितना हुआ है मैंने नहीं बताया, फिर भी आप जीपी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन कैसे शेयर किया कि आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक में है जितना भी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू मतलब कॉस्ट 20,000 है. अगर आप बेचना चाहते हो तो वो आप 30,000 में बेच सकते हो, राइट? दैट मीन्स योर ग्रॉस मार्जिन इज 30,000 माइनस 20, 10,000. 10,000 upon sales value, GP upon sales value into 100 is your GP ratio. Now yes, it's clear, yes, okay. right? अब देखो, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आपने ये लिख लिया ना. Yes, Now we will find out the gross profit also. First, audio and video. See, net sales
कितना रुपीज है नेट सेल्स? 2,15,000. Plus reduction. Reduction is nothing but it is discount. So if I will not offer the discount, my sales maybe is 2,20,000. That Yes. is called gross sales. 2,20,000, and my GP ratio is 40%. So अगर आप डिस्काउंट नहीं देते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 88,000. Yes. 88,000. अभी ध्यान से सुनो बेटा. Yes. यहाँ पे मैं आपको वो पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. मेरा सेलिंग प्राइस है से एग्जांपल 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज, तो मेरा 4 रुपीज इज अ कंट्रीब्यूशन. और Contribution. अगर मैं इधर वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट लिखूं, दैट मीन्स दिस शुड बी योर जीपी, राइट? Yes. तो अगर मैंने प्राइस में डिस्काउंट दिया 10 की जगह पे, मैंने उसको 9 रुपीज में बेचा, कॉस्ट तो मेरा सेम है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपीज. हेलो? 3. Yes, sir. 10 रुपीज माइनस 6 रुपीज, 4 रुपीज था. मैंने डिस्काउंट 1 रुपया दिया, तो मेरा सीधा वो 1 रुपया डिक्रीज हुआ, वो इम्पैक्ट किस पे आया? ग्रॉस प्रॉफिट पे, राइट? सिमिलर वे मैंने जो रिडक्शन किया प्राइस में, Yes, sir. रिडक्शन इन प्राइस, दैट रिड्यूस माय ग्रॉस प्रॉफिट. तो मैंने कितना रिडक्शन कर दिया 5,000 का? सो मेरा Yes. ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? 83,000. 83,000. Yes. सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड आउट फॉर रेस्ट ऑफ द टू डिपार्टमेंट. कंप्लीट कर दो एंड मुझे अमाउंट बता दो. Yes.
Tell me the gross profit of second department. So 17998. No, No, 63,000 plus 3000. plus 3,000. So I've reached till your like before the reduction. No. So the last is okay. I got it as 14,998. So rounding up to Okay. So in case in the exam, if I like miss by two three numbers, will they check? Will they reduce marks? नो, कट नहीं करेंगे. आप राउंडिंग अप भी कर सकते हो और जितना आया उतना भी लिख सकते हो. Yes. So the last is 59,000. 59. 59,000. Yes. First department, gross sales 220 minus reduction in prices nothing but the discount 5,000, I think. Yes. So 2,15,000 is a net sales. Yes. COGS is nothing but the opening stock plus purchase minus closing stock is equal to COGS का figure, right? And opening stock cost is given, I think 1,20,000. Please confirm. Yes. Purchase figure 1,50,000. But I don't know the closing stock. So I have a figure of gross profit as per working note number 2, 83,000. Yes. Right? So sales 2,20,000, sorry, 2,15,000 minus 83,000. So you'll get the COGS. COGS is nothing but Yes. sales minus GP. Correct? Now 1,32,000. तो ये दोनों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऐड कर दो 150 माइनस 132.
So we'll get the figure of closing stock 138. Correct? Yes, sir. Now you reduce overhead. हम लोग उसका नीचे स्टेटमेंट बनाएंगे. ये थर्ड स्टेटमेंट है ना अपना. Yes, sir. ये सेकंड हो गया, थर्ड स्टेटमेंट है ये. सो यहाँ पे हम फोर्थ स्टेटमेंट बनाएंगे. ओवरहेड, ओवरहेड लेस करेंगे तो बैलेंस इज नेट. कंप्लीट करो. रिमेनिंग टू डिपार्टमेंट का भी आप लिखोगे बेटा. Yes, sir. चलो कंप्लीट करके मुझे बता दो. Yes, sir. कितना प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह ये स्टेटमेंट. So one second. Just the last calculation. ओके.
Please confirm your answer. Yes, sir. Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. Now, can you prepare this statement overhead at homework? Yes, I do. So just reduce the overhead amount, then you will get the net profit. Yes, sir. So we can cover more questions. Yes, sir. Question number 7. Yes, sir. A engineering company having 25 different types of automatic machine. So 25. Furnish you the following data for 1920 in respect of machine B. That means ये एक ही मशीन की बात कर रहा है बेटा. ये Yes, समझना बहुत जरूरी है. 25 टोटल है उसके पास, बट वो अभी एक ही मशीन की बात कर रहा है, दैट इज मशीन बी. yes, Cost of the machine 50,000, scrap value nil and life 10 years. So डेप्री कितना? yes, Other sir. expense are factory rent, heating, lighting, supervision, reserve equipment for machine B, area of the factory 80,000, area occupied by the machine 3,000. Power cost is always variable. Power cost 50 paisa per hours while in operation. Yes, Then wages of operator is 24 per day of 8 hours. तो 24 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे बेटा, तो yes, रेट वेज रेट पर आवर्स कितना हो जाएगा? 3 रुपीज, yes, sir. इंक्लूडिंग ऑल फ्रिंज बेनिफिट. मतलब ये 3 रुपीज फाइनल फिगर. ये Yes, sir. अटेंड वन मशीन अंडर द सेटअप एंड टू मशीन वाइल अंडर ऑपरेशन. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे होता है. से एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग पार्लेजी बिस्किट एज वेल एज मोनेको. तो जब पहले हम लोग सेटअप किसके लिए कर लेंगे, तो कि समझो हमने पार्ले जी प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप कर दिया. सेटअप करने के बाद मैं पार्ले जी प्रोड्यूस करूंगा, राइट. Yes, और हमने मोने को प्रोड्यूस करने के लिए उसको भी सेटअप कर ले दिया. फिर हम प्रोडक्शन करेंगे. तो मैं एक वर्कर हूं. जब प्रोडक्शन कंटिन्यू है तो आई कैन हैंडल एट अ टाइम 2 मशीन. yes, sir. Yes, दैट मीन्स मेरा वेजेस जो 3 रुपीज था वो दो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. आधा इधर चला गया 1 रुपीज 50 पैसा. जब प्रोडक्शन स्टॉप हो गया सेटअप करूंगा तो आई कैन नॉट हैंडल 2 मशीन एट ए टाइम. इसके लिए मैंने इसको टाइम दिया, तो ये 3 रुपीज हो जाएगा और इनका भी 3 रुपीज अलग से लगेगा. मतलब जब सेटअप करेंगे तो मेरे को एक मशीन पूरा का पूरा मुझे ही अटेंड करना पड़ेगा. बट जब ऑपरेशन में होगा तो एट ए टाइम में 2 मशीन कर सकता हूँ. तो ऑपरेशन के लिए मेरा वेजेस पर आवर्स 1.50 पैसा हो जाएगा. बट सेटअप होगा तो मेरा वेजेस पर आवर्स 3 रुपीज हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ महक? yes, yes, Estimated production hours 3,600 per annum. Estimated setup hours is 4,000. Total hours मेरा कितना है भाई? मेरे को तो ये देखना है कि भाई मैं टोटल आवर्स कितना स्पेंड कर रहा हूँ. 4,000. yes, Prepare a schedule of comprehensive machine hours rate. मतलब रेट पर मशीन आवर्स फाइंड आउट करना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स. तो ये अलग से जॉब का हमको फाइंड आउट करना है, राइट. तो yes, ये इंफॉर्मेशन एक बार आप रीड करो और ट्राई करो खुद से. फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ. एक 5-10 मिनट में देता हूँ, आप ट्राई करो. yes,
हुआ महक? So the this I'm doing wages of operator. So what does this mean? Wages of operator rupees 24 per day, including all fringe benefits. Fringe benefit is an additional benefit वो include So what? अलावा और कोई benefit नहीं रहेगा मतलब Your we voice will is get breaking. 24 rupees per day of 8 hours per day तो पर So, आवर सब कुछ भी उसमें मिलेगा और इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है जो भी फ्रिंज बेनिफिट था वो उसमें इंक्लूसिव है so the voice is breaking. 24 rupees per day divided by 8 hours so it will मिला per hours including all fringe benefit so एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जब होता है और सैलरी का टॉपिक आपने टेक्स्ट में किया होगा तो उसमें फ्रिंज बेनिफिट मींस एडिशनल बेनिफिट वो भी इसमें इंक्लूड ही है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या है अगर एक्सपोर्ट होता है तो मुझे फ्रिंज बेनिफिट ऐड करना Your voice is क्लियर breaking. हेलो Voice is breaking. एक सेकंड Yes. मैं No, sir. wait for minute. Your internet connection is unstable. So I can't hear you. Hello. So the voice is still breaking. Wait. शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू है हेलो So still breaking. अगेन No, sir. हेलो So breaking.
Hello. Yes, sir. Now it's clear. Now clear? Yes. Wait for 1 minute. Yes. हेलो. Yes, sir. हाँ बेटा, फ्रिंज बेनिफिट 3 रुपीज जो लिखा है पर आवर्स मैंने फाइंड आउट किया 24 डिवाइडेड बाई 8. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि उसके अंदर सारे के सारे बेनिफिट इंक्लूसिव है, 3 रुपीज से ज्यादा हम पर आवर्स नहीं देने वाले. Okay. इज क्लियर? Yes, sir. ओके. सो अब आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, कैलकुलेट करो फिर मैं बताता हूँ. Yes. So, only the wages part, it is 3. So, into 80 by any chance? हाँ मैं एक बोलो. So,
24 divided by 8 is 3. So 3 into 80 by any chance? But it is a per hour, so why you want to multiply it? Fixed cost total find out करो, divided by number of hours, तो आपको fixed overhead per hours मिल जाएगा plus 3 rupees. Okay. So like they have given preparers comprehensive machine rate and find the cost हाँ, of comprehensive का मतलब fixed overhead per hours plus variable overhead per hours. तो wages तो आपको per hours ही है ना, तो yes उसको वापस चेंज मत करो ऐसा. yes आप टोटल फाइंड आउट करोगे तो अगेन उसको नंबर ऑफ आवर सेम नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करोगे. इसके लिए आप उसको पर आवर से रहने दो. आप yes फिक्स कॉस्ट टोटल फाइंड आउट करो और उनको आप ये करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, तो आपको फिक्स ओवरहेड पर आवर्स मिल जाएगा. so power cost will be 50 per paisa while in operation. महक, डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन अमाउंट 5,000. 5,000, that is 50,000 divided by 10. 5,000, correct? Yes sir. Then after depreciation, second should be factory rent, right? Factory. Yes sir. So factory rent is given 50,000 into my area. This is the area. Okay. Yes sir. 3,000 upon 80,000. Okay. Yes. So tell me the amount. 1875. 1851. Sorry, yes sir. 75. 3 upon 80. Yes sir. Yes sir. मैंने कैलसी पे कैलकुलेट किया, 1875 आ रहा था. चेक कर लो एक बार फिर से. By mistake I pressed 1 instead of 0. Okay. Then heating and lighting 40,000. Yes sir. So 40,000 again it distributed basis on area because light point is not given in the question. So 40,000 into 3 divided by 80, 1500. Yes sir. Then supervision पर एनम बेटा 1,50,000 है, तो कितना आना चाहिए हमारे मशीन के लिए, बी के लिए बेटा?
Um, देखो बी हम एक ही मशीन का कर रहे हैं ना, और हमारे पास टोटल कितने मशीन है? 25 machine. 25. Yes, sir. तो सुपरवाइजर आर ऑब्जर्विंग एंड allocate the time to 25 मशीन, तो पर मशीन कितना आ जाएगा? 6,000. So I thought that the whole data is for machine B, so I didn't take all this. सॉरी, Like it was written in respect of machine B, like the starting for instance the following data for 2019 or 2020 in respect of machine B. So I thought that is the per year machine B only. So I ओहो, didn't. नो, So सो in case if I do वन this in लैख the फिफ्टी exam, थाउजेंड like suppose in case in the exam I don't understand something and I take my own assumption, then can I write down like note? Will they But cut here mark? it is clear specified a limited engineer company having 25 different types of machines furnish the following data for 1920 in respect of machine B. Yes. Then this is supervision, right? So we Yes. have to remember that supervisor have to supervision all 25 machines, na beta? Yes. Understood. So 1 lakh 50 divided by 25. How much rupees? 6,000. 6,000. Then reserve for 5,000. equipment. It is clearly specified that reserve for machine B, so we don't have any Yes. issue. Now take the total beta. 5,000 plus 19,375. 19,375 is total fixed overhead divided by hours, 4,000. So fixed overhead rate per hours. 4.84. 3-4 डिजिट दे दो ना, जितना भी आया है। 37. 1975, 4.8437. 4.84375. Yes, sir. Any doubt in this part? So, Just write down. yes, sir. Did na? Now Yes, there are two separate things. One is a setup and one is a operation. So now yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट सेटअप के लिए डिफरेंट होगा एंड ऑपरेशन के लिए डिफरेंट होगा। तो देखो पावर पावर दिया हुआ है ना यहाँ पे 50 पैसा बेटा, तो पावर की जरूरत कब होती है? व्हाइल इट इज इन ऑपरेशन। Yes, sir. एंड सेटअप मेरा 3 रुपीज है एंड वेजेस वेजेस 3 रुपीज कैसा आया? 24 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स। मैं Yes, sir. सेटअप के टाइम पे एक ही मशीन हैंडल करता हूँ, जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो 2 मशीन एट ए टाइम, तो 1 रुपीज 50 पैसा, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे 3 रुपीज आएगा और यहाँ पे 2 रुपीज। Yes, sir. कंप्रेहेंसिव में ये 4 रुपीज जो है प्लस 3 रुपीज किया, तो यहाँ पे 7.84375 हो गया।
और इधर 4+2 किया तो 6.84375 हो गया। कंप्लीट दिस। डन। Yes, sir. Now they ask the cost of following job. This is job numbers is given. जैसे हम जॉब XYZ बोलते हैं एटसेट्रा। Setup. So here setup 80 hours into सेटअप के लिए बेटा मेरा रेट है 7.84375। तो मल्टीप्लाइड करेंगे इंटू 80 तो कितना आता है? Or 60, sorry, 627.5. यहाँ पे कितनी आवर्स दी है? 40 इंटू 7.84375। 313.75 बेटा। Yes, sir. ऑपरेशन के लिए मेरा रेट है 6.84375 Yes, sir. इंटू 130 कितना आता है? Or 889. So that we can take it as 890. प्लस 627.5 so 151719 करेक्ट। Yes, sir. 1095 95. plus 313.75 Or 1408.7. अभी महक, आज आपका कॉलेज का लेक्चर कितने बजे है बेटा? So I'm not attending today. I'm not attending today. टुडे यू आर नॉट अटेंडिंग। No, sir. चलो ये लिख लिया ना आपने? Yes, sir. बेटा हम लोग फिक्स ओवरहेड फाइंड आउट करते हैं जब फिक्स ओवरहेड अभी जैसे हमने किया ना रेट पर आवर्स, तो हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट अपॉन आवर्स किया ना बेटा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो सिमिलर वे समटाइम्स हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, से एग्जांपल 1 लाख रुपीज एंड हमने एस्टिमेट किया कि हम 25,000 यूनिट्स बनाएंगे, Yes, sir. तो ये ₹4 पर यूनिट आया। तो ऐसा हम लोग उसको एकदम बेस्ट स्टेटमेंट क्या देते हैं, तो कि ये बजटेड ओवरहेड है और इसको Yes, हम
बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलते, तो वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी यूनिट्स हो सकता है, आवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा Yes. सा संभाल के करेंगे। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एग्जैक्टली हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो कि जब भी मुझे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट कस्टमर को एडवांस में बतानी हो, क्योंकि हम जनरली कस्टमर को एडवांस में बताते हैं, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पता होनी चाहिए। वन इज अ वेरिएबल कॉस्ट, one is a fixed cost, then only we can know the total cost per unit, and then we added our profit, then we can find out selling price per unit. बट ये सब कुछ मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले चाहिए। तो Yes. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में एक्चुअली इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि भाई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का प्राइस इतना है, फिर Yes. लेबर का इतना आवर्स लगेगा इनटू लेबर रेट पर आवर्स, फिर वेरिएबल ओवरहेड कितना है करके मेरे को मिल गया 10 रुपीज। Yes. जस्ट एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। अब मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है मेरे पास टोटालिटी में है। सपोज मैंने एस्टिमेट लगाया कि भाई मेरा टोटल फिक्स कमिटमेंट कितना है, तो क्या 1 लाख रुपीज, तो क्या मैं 1 लाख रुपीज एक ही कस्टमर से रिकवर कर लूँ, तो क्या नहीं, No. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। Yes. तो हम क्या करेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। सपोज मैंने अंदाजा लगाया 25,000 यूनिट्स, Yes. तो यहाँ पे 4 रुपीज पर यूनिट हमारा एस्टिमेट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 4 हुआ, मैंने डिजायर प्रॉफिट 6 ऐड किया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20. 20 रुपीज। Yes. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुझे कहाँ पे हेल्प करता है, तो के एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करने में किधर Yes. हेल्प करता है बेटा। Absorption rate. हाँ, जिसको हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट जब हम फाइंड आउट करते हैं, सो हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट को फाइंड आउट करने के लिए 6 डिफरेंट मेथड है। पहली मेथड का नाम है आउटपुट मेथड, फर्स्ट मेथड का नाम है Output method. आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड में या तो हम लोग यूनिट्स भी बोल सकते हैं, या यूनिट्स भी हो सकती है क्वांटिटी, केजीस हो सकता है, लीटर मीटर, या तो नंबर ऑफ जॉब भी हो सकता है। मतलब अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है और जॉब बेसिस काम कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ जॉब की बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द आउटपुट। ये समझ में आ गया। Yes. Sir. सेकंड मेथड मशीन आवर्स। तो कोई भी मेथड आप फॉलो करो, ये टोटल जो 1 लाख रुपीज मैंने एस्टिमेट किया था दैट रिमेन सेम। ये यहाँ पे 25,000 यूनिट्स लिखा है, उसकी Yes. जगह पे आ जाएगा मशीन आवर्स एस्टिमेट। Yes. बट अगेन इट इज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ओनली। Yes. नेक्स्ट आएगा लेबर आवर्स, नेक्स्ट आएगा लेबर कॉस्ट, नेक्स्ट मेथड है मटेरियल कॉस्ट, एंड नेक्स्ट इज प्राइम कॉस्ट। तो टोटल कितनी मेथड हो गई बेटा, 6. 6 मेथड। ये लिख लो आप इतना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग Yes. Sir. help us to find out fixed cost per unit, before start of the production. Therefore, we can
estimates selling price per unit Yes, sir. अभी बेटा ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, Yes, sir. ये एग्जाम्पल लिख लो अभी, फिर डिटेल्स में हम लोग एग्जाम्पल बाद में वापस एक्सटेंड करेंगे, अभी लिख लो टाइमली। लिखा बेटा? Oh, yes, sir. नाउ 6 डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट, तो ये 6 डिफरेंट मेथड है। Yes, sir. Written. नाम लिख लो। Done, sir. हेलो, हाँ बोलो बेटा। Done, done. Done na? Yes, sir. Now we will go for question number 8. ABC Limited is a small company undertakes variety of jobs. तो इसका आउटपुट भी बोलते हैं जॉब्स को हम। For its customer budgeted profit loss for the year ended 31st March 2020, sales is given direct labor cost, direct material prime cost, fixed production overhead. तो हमारा बजटेड ओवरहेड हो गया 6 लाख रुपीस बेटा। बजटेड ओवरहेड कितना आया? 6 lakhs. प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 3 + 6 9 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख 20, टोटल 12 लाख 80,000, प्रॉफिट इज 1 लाख 80,000। budgeted data, labor hours for the year 50,000, machine hours 30,000, number of jobs 600। Yes, sir. अब बेटा यहां से जो ये इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज रिलेटेड टू सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट, वो बाद में देखते हैं। यू आर Yes, sir. रिक्वायर्ड टू a requirement part, calculate different method of 6 overhead absorption rate, right? Yes, तो sir. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बेटा फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। तो मेरे पास 6 डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड का क्या नाम है माइक? Output method. आउटपुट, वेरी गुड। सेकंड? Machine hours. थर्ड? Labor hours. फोर्थ? Labor cost. फिफ्थ? Material cost. एंड लास्ट वन? Time cost. अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बजटेड ओवरहेड, आपको मैं टाइम दूंगा बाद में लिखने के लिए। 6 लाख रुपीस है। Yes, sir. हाँ 6 lakhs। तो irrespective of the method, everywhere my budgeted overhead amount is 6 lakhs rupees। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी, विच मेथड दे वांट टू फॉलो। Yes, तो दिस शुड बी 6 lakhs। अब देखो बेटा अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब दिए दिया है 600, तो मेरा आउटपुट हो गया 600। yes, sir. BLS स्टैंड फॉर बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, 600 जॉब्स मैंने लिखा, तो मेरा रेट आएगा 1,000. ₹1000, और मैं नीचे यहाँ पे लिखूंगा पर जॉब। क्या लिखूंगा बेटा? Per job. नाउ आई वांट मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स कितना है? 30। 40,000. तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 30,000 मशीन आवर्स, तो क्या रेट जनरेट हुआ? 20. 12, 20. 20। Yes. ठीक है बेटा?
₹20 पर मशीन आवर्स हो गया। फिर लेबर कितना है? 50,000। सो Yes. डिवाइडेड बाय 50,000 लेबर आवर्स, क्या रेट आएगा? Well. 12 पर लेबर आवर्स। फिर लेबर कॉस्ट कितना है? 2 lakhs rupees। Yes. सो हियर 2 lakhs rupees। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6/2, 3 times, और we can say 6/2 into 100, so 300% of labor cost। 3 times of labor cost या तो 300% of labor cost। Yes. ये समझ में आ गया बेटा? Yes. सिमिलर वे यहाँ पे मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। Yes. 3 times और 300% of labor cost, here 1 lakh rupees, so we can say 6 times or 600% of material cost, then prime cost is 2 plus 1, Yes. 3. 2 times. 2 times। 2 times, or we can say 200% of prime cost। कंप्लीट कर लो बेटा। Yes. ये फर्स्ट ए रिक्वायरमेंट पार्ट है। Yes. आपका लिख के हो जाए बता दीजिए प्लीज। Yes. Yes. Order. नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट बी, calculate the cost estimate for jobs M67 using in turn each of 6 overhead absorption rate calculated in a above, right? तो अब उसके लिए ये इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है?
An inquiry has been received and production department has produced estimate the prime cost involved and hours required for completing job M67 is shown below. Direct material, direct labor. So this is two things is a prime cost, labor hours and machine hours. तो यहाँ पे हम Right. लिखेंगे बी calculations of estimated cost of M67। तो इतना ही कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन लिख रहा हूँ। पर्टिकुलर आउटपुट मेथड, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। Yes. एक मटेरियल 500 है, कॉलम उतना ही चाहिए पहले जितना था। Yes. 500 एंड 400। प्राइम कॉस्ट Yes. इज 900। ओवरहेड, ये एक ही जॉब है Yes. M67, तो पर जॉब हमारा रेट है 1000। सो माय कॉस्ट इज 1900। डन। Yes. Yes. तो ये तो सेम रहेगा 500, कोई भी मैं वो सिलेक्ट करें 900। अब नंबर ऑफ आवर्स मशीन आवर्स 100। 100 है ना बेटा? Yes. हाँ, और रेट कितना है? 20। Yes. 200. No, sorry, 2000. 2000, so total 2900। Done. Yes. Now next, labor hours। Okay, 500 plus 400, 900। लेबर का रेट है 12 रुपीज एंड नंबर ऑफ आवर्स है 160। Yes. 160 into 12, Yes. 2820। करेक्ट। Yes. Yes. नेक्स्ट इज अ लेबर कॉस्ट। तो ये 500, 400, 900 रिमेन्स सेम। चलो डन। अभी लेबर कॉस्ट के अंदर क्या रेट आया था? तो क्या 3 टाइम्स और इधर Three times. 300%। हाँ, Yes. तो लेबर का कॉस्ट है 400, सो 400 इंटू 3 टाइम्स लिखो या तो 300% लिखो। 1200. मटेरियल कॉस्ट मेथड, तो ये तो सेम रहेगा। चलो, नाउ मटेरियल कॉस्ट मेथड में क्या रेट है? 6 टाइम्स। 6 times. 3000. 500 plus 400, 900 एंड प्राइम कॉस्ट के 2700. टाइम्स। Yes. 900 into 2 times 18, 1800. 2700। Yes. Sir. तो इसमें कोई डाउट ये सब में बेटा? हो गया ये? Yes. हाँ, अभी Yes. देखो इस, हाँ अभी इसके लिए कंपनी कैसे सिलेक्ट करेगी कौन सी मेथड उनके लिए सूटेबल है। तो अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल कर रही है तो आउटपुट मेथड बेस्ट है। अगर कंपनी एक से ज्यादा
प्रोड्यूस करके सेल कर रही है और प्रोडक्ट आउट ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू सेम है और सिमिलर है, देन आउटपुट मेथड इज बेस्ट. अगर Yes, sir. आउटपुट मेथड फेल्ड हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, कब नहीं होगा तो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट है एंड इट्स नॉट सेम और सिमिलर फ्रॉम ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर हम एडिशनल चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट मशीन ओरिएंटेड है तो मशीन आवर शुड बी सिलेक्टेड, अगर लेबर्स ओरिएंटेड है तो लेबर आवर शुड बी सिलेक्टेड, अगर एक से ज्यादा टाइप के लेबर है तो लेबर कॉस्ट मेथड शुड बी सिलेक्टेड. ओनली वन टाइप ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, से एग्जांपल स्किल लेबर या तो सेमी स्किल या तो अनस्किल, देन लेबर आवर्स मेथड शुड बी फॉलो. बट सेमी स्किल भी है, स्किल भी है, अनस्किल भी है, so labor cost method should be followed. If product is mainly depends upon the material, then material cost should be followed. If product is depends upon the material as well as labor, then prime cost method should be followed. Yes, sir. Clear? Yes, sir. तो ये मैंने थियरी पार्ट में भी लिख के रखा है. एक 5 मिनट में हो जाएगा अपना. In order to get fixed overhead cost per unit for the purpose of determining sales price, we need to know the actual fixed overhead and actual level of activity. But the actual overhead and actual level of activity would be known us only at the end of the accounting period, whereas the sales price has to be known before the commencement of accounting year, and therefore actual information cannot be used. Absorption costing techniques as against marginal costing techniques lays down artificial link between budgeted overhead and budgeted level of activity to get the budgeted overhead charge, which is known as absorption rate or a recovery rate or a application rate. समझ में आया बेटा? Yes, sir. The level of activity can be expressed in terms of output, machine hours, labor cost, material cost, prime cost, main days मतलब labor के related ही हो गया. Yes, sir. Once the absorption rate is developed, every time something is produced, the overhead will be charged at absorption rate. जैसे ये जॉब में हमने चार्ज किया ना, वैसा. Yes, sir. Now, depend upon the terms in level of activities expressed, there are 6 different methods stated as below. आउटपुट मेथड फॉर्मूला सेम है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट हो जाता है. मशीन आवर्स है तो बजटेड मशीन आवर्स हो जाएगा, लेबर रेट है तो बजटेड लेबर आवर्स हो जाएगा, Yes, sir. लेबर कॉस्ट है तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा. डिवाइड करेंगे वही चेंज होगा ना. Yes. मटेरियल है तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा डिवीजन में, एंड प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. राइट, जो हमने अभी यहाँ पे किया. नाउ सिलेक्शन ऑफ मेथड. If company manufacture only one product or a two or more product, but which are more or less identical from overhead point of view, that is the important overhead point of view, then the output method is best. तो इसके अंदर हम बात कर रहे कि it is identical from overhead point of view. When the company manufacture two or more product which are quite different from overhead point of view, different और या तो similar किसके point of view से, overhead, then machine hours rate हो सकता है. If production is basically machine oriented, then overhead would be mainly depends upon the machine utilization, and therefore the product which will make more use of machine should be charged or more amount of overhead also. Accordingly, we followed machine hours rate. Labor hours or labor cost method. When output is predominantly labor oriented, we may follow one of two method. मतलब हमारा कोचिंग इंडस्ट्रीज है तो हमारा फैकल्टी के ऊपर ही डिपेंड है, so it is labor oriented. If overhead mainly depends on labor time, then the labor cost rate method should be followed. Whereas if overhead mainly depend upon the labor type, then labor cost method should be followed. It may be noted that if there is only one type of labor or there are different type of labor but wage rate is same, then this two method gives same results. Yes. Material cost method. If overhead depends upon the cost of raw material consumed, then this method should be followed. Prime cost method.
if overhead depends on not only the material cost but also on labor cost, then we follow this method. बस Yes. end of this lectures, क्योंकि बस अपना यहाँ पे हो गया. कल Yes. अगेन सेम टाइम ना 7:30 Yes. बेटा. Yes. 7:30. हाँ, मैं जस्ट स्टॉप कर लेता हूँ Yes. स्क्रीन. Thank you, sir.